என்னோட லைஃப்ல நல்லது நடக்கலையேன்னு கவலைப்படுறவனோட அவனோட லைஃப்ல நல்லது நடக்குதுன்னு பொறாமப்படுறவன் தான் இந்த உலகத்திலே அதிகம். இந்த உலகத்துல ரொம்ப ரொம்ப நல்லவன் யார் தெரியுமா? அடுத்தவன் சந்தோஷத்தை பார்த்துட்டு வயிற்று செயல்படாமலும் பொறாமப்படாமலும் தானும் சந்தோஷமா இருக்கான் பாத்தீங்களா, அவன் தான் இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப ரொம்ப நல்லவன். பொறாமன்றது நம்ம வாழ்க்கையில இருக்க சந்தோஷத்தை அழிச்சிடும். பொறாமை நம்ம வாழ்க்கையை திருப்பி போட்டுரும் சொல்லலாம். எப்படின்னு கேக்குறீங்களா? போ ரா மை, இதை அப்படியே திருப்பி போட்டு பாருங்களேன். மை ரா போ. பொறாமையோட சுத்துறோம்னு வச்சுங்களேன், நம்மளோட வாழ்க்கை மயிரா தாங்க போகும். இந்த பொறாமையில ஒரே ஒரு எழுத்தை மாத்தி பாருங்களேன். பொறாமை பொறுமை, ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு எழுத்து தான் வித்தியாசம். ஆனா இது நம்மளோட தலையெழுத்தையே மாத்திடும். பொறுமை கடலினும் பெரிது, போட்டி இருக்கலாம் ஆனா பொறாமை இருக்கக்கூடாது. பொறாமைன்றது நம்ம செருப்புல பட்ட சேரு மாதிரி, சரியான நேரத்துல கழுவாம விட்டோம்னு வச்சுங்களேன், செருப்போட சேர்ந்து நாமளும் நாரிடுவோம். பொறாமையோட வெத்தா வாழ போறீங்களா இல்ல பொறுமையோட கெத்தா வாழ போறீங்களா? உனக்காக ஒருவன். Did you know that more than half of all the Muslim countries in the world have at one point in history been ruled by the Turks? You see, most people know the Turks as the people who live in Turkey, a country that sits right between Europe and the Middle East. Many of them have blue eyes and blonde hair, and if it weren't for the fact that they were Muslim, you could have confused them for being just another European Mediterranean nation. But in reality, the Turks come from a very far away land, as part of a bunch of countries that were once all part of the same family, somewhere in the flat, grassy deserts of Central Asia, in a place called the Great Steppe. In the 400s, the Turks were a bunch of small nomadic tribes migrating from place to place and warring with other tribes in an actually quite similar way to the Arabs before Islam. And it was around this time that the Mongols were starting to unite and pose a serious threat to the other nations in the region. And so by the 500s, Turks had packed their bags and started migrating west. Now, the thing about the Great Steppe is that it's wide, flat, and not a whole lot of people live there. So when the Turks moved west, they were able to expand into huge swaths of land with very little resistance. And eventually they consolidated their new land into the first Turkic Empire. Fast forward a couple hundred years and the Muslims have expanded out of the Arabian Peninsula. And now they're on the edge of the Turkic Empire. And at the same time, China was swallowing up land in the east and was headed right for the Muslims, and the Turks were caught in the middle. A small group of Turkish soldiers decided to join the Muslims in the Battle of Talas, an immensely important battle in the rivalry between the Muslims and the Chinese. And that's when they first heard the message of Islam. The Muslims managed to defeat the Chinese, and some of the Turks even converted after the battle. And this moment in history was the starting point for the rest of the Turks to eventually embrace Islam. A couple hundred years later, a merchant from Bukhara, which is where Imam Bukhari is from, by the way, was traveling through Central Asia to do business. He asked one of the local Turkish rulers if he could build a masjid there, since Muslims were now using the trade route a lot and they needed somewhere to pray. The ruler granted him permission and even gave him some money to build it. Eventually, the masjid was built and the Muslim caravans used to stop by and pray and rest. And one 12-year-old boy by the name of Satuq Bughra Khan saw this and became curious. He entered the masjid and saw Muslims there praying 5 times a day and began asking questions. Soon after, he decided to become Muslim himself, but he kept his Islam a secret from his family. You see, the young boy was the nephew of the ruler and he was next in line, and he did not want to jeopardize his chance to bring his people to Islam. Eventually, Satuq took the throne, becoming the first Muslim Turkish Sultan. And by the way, his capital was in Kashgar, which is one of the main cities where the Uyghurs live in China, and the Uyghurs are Muslim Turks. It's all coming together now. So in the year 934, he converted his entire empire from Tengrism to Islam. And as the Muslim traveler Ibn Fadlan put it, 200,000 tents became Muslim, which has got to be at least 500,000 people, if not more, considering each tent is a family. It was called the Karakhanid Empire, and it was the first Muslim Turkish nation. And their descendants would become the Uzbeks in Uzbekistan, the Uyghurs in China, and the Khazaras in Afghanistan. And it just so happens that one of the enemies of the Karakhanids, in an effort to defeat them, ended up making another Turkic tribe Muslim. You see, the Samanids were a Persian tribe that lived nearby, and they were fighting over this land here. And the Samanids, they had been Muslim for a while now, and they were spreading the message of Islam in Central Asia. And it was great that the Karakhanids had become Muslim, but they still had a land dispute from before. The Samanid Sultan Ismail Semeni decided that the best way to solve this dispute was to ally with other Turks in the region. He solidified an alliance with another powerful chieftain by marrying his daughter to him. Ismail quickly became influential over
them, and eventually the entire Turkic tribe embraced Islam. They were called the Oghuz Turks, and their descendants would become the Turkmen of Turkmenistan, the Azeris of Azerbaijan, the Qashqai in Iran, and of course the modern Anatolian Turks of Turkey. But that still leaves the biggest Turkic country, Kazakhstan. You see, the Kazakhs were originally called Kipchaks, and they created their own empire just north of the Black Sea. It was a huge empire, and it stretched from Hungary to Mongolia until once again the Mongols showed up and they just got smashed. The Mongols took over their lands and now ruled over the Kipchaks. Subhanallah, wouldn't you know it, these Mongols became Muslim too. This part of the Mongol Empire was called the Golden Horde, and in 1313 Özbeg Khan became its sultan. And then a very similar story to Saltuq Bughra Khan, who was that sultan of that first Turkic nation we talked about. Özbeg became Muslim at a young age and waited for his turn to be sultan. Once he rose to power, he immediately began preaching Islam to his people. Soon enough, the entire Golden Horde accepted Islam, both the Mongols and the Turks within it. The Kipchak Turks would later become the Kazakhs of Kazakhstan and the Kyrgyz of Kyrgyzstan, and the Tatars of Russia and Eastern Europe. The Mongols, on the other hand, would go on to mix in with other Turkish nations, which supports the idea that Uzbeks got their name from Özbey Khan. They may actually be a Turkic-Mongol mix after all. And what's interesting is that these different Turkic and Mongolian tribes went on to build some of the most powerful and longest-lasting empires in Muslim history. The Ottomans, the Seljuks, and the Zengids, who Salahuddin was a general under, by the way, all came from the Oghuz Turks. The Memluks and the Khwarezmian and the Nogai Horde all came from the Kipchak. And the Muslim Turkic Mongols went on to create the Mughal Empire, the Tughlaq dynasty, and the Crimean Khanate. The Turks have contributed immensely to the Ummah and have spread Islam in lands as far away as Mongolia to Ukraine to India and to Bosnia. Even think about the Lipka Tatars, who are Muslim Turks in Poland, who built the first masjid in New York City. Or think about Kuchum Khan and his army of Turks who spread Islam to the people in the middle of Siberia, while at the same time fighting a war with the Russians. The Turks are a massive group of people with hundreds, if not thousands, of little tribes and nations scattered across the earth, each with their own language and culture and history, tracing their roots back to a similar origin, and yet somehow they all became Muslim in different ways. And alhamdulillah that they became our brothers in Islam. And if you like this video and find it at all interesting, please give it a thumbs up, share it with your friends, and subscribe if you want more videos about Muslim history and culture from around the world. Mirza Jairuddin Muhammad, Mughal Emperor Babur. You know what? The moment this man stepped in India, Guru Nanak in his own words said that a messenger of death has come. Now you may ask a question that what separates the other Mongol leaders like Genghis Khan, Babur's father Taimur Lang from Babur? Obviously, Genghis Khan killed 40 million people. Taimur killed 17 million people. You know that in any town these fanatics went, they killed all the men, burned the town down, captured the women and children, and they were brutally tortured in public. Many of you know what that torture included. I will not mention that in the video. Now, Genghis Khan and Taimur Lang was not killing for religion. It's just power and conquest. But Babur used the religious connotation very strongly, and it gave him more power to kill because he thought he was doing jihad. Many times he ransacked Muslim towns and Muslim populations were also killed. Basically, he used religion according to his convenience. So him building mosque was not out of prayer or devotion. It was just a symbol of power. See, I am not saying that Babur is worse or Genghis Khan is better. All these were equal. But using religious connotation according to your own convenience to kill both Hindus and Muslims is just not acceptable. According to our history books, Babur was an acclaimed writer who had a profound love for literature. During his 47-year life, Babur left a rich literary and scientific heritage. This is how sugar-coated our history books are regarding this fanatic tyrant. You want to know the more harsh truth? So suno. Babur sold thousands of Hindu women in the markets of Kandahar, Kabul and the bazaars of Middle East. Now let's come to the major point of the video. Why legacy of Babur should be erased from this country in every possible way? Because nobody should ever identify the present generation of Muslims with Babur. According to experts, he did not commit atrocity. He was an atrocity. Whether it's a Hindu temple or a Jain temple, he destroyed everything. Nobody should identify themselves with him because that's not going to lead to a good future. Because he is not a devout Muslim by any standard. Even he's not a devotee of any kind. Guys, this misconception needs to change. Our history books needs to stop glorifying these invaders. I'll ask a simple question to end the video. That do you think Babur manipulated common man using the name of religion to commit a next level of atrocity?
भारत का प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे देश जाता है, पाकिस्तान से सुलह करता है और अगले ही दिन गुजर जाता है और इसकी कोई इंक्वायरी नहीं होती। ये है कहानी लाल बहादुर शास्त्री जी के मिस्टीरियस डेथ। द गवर्नमेंट डिड नॉट कंसिडर एनी इंक्वायरी टू बी नेसेसरी। इंदिरा जी को जब शास्त्री जी के डेथ के बारे में पूछा गया तब उनका जवाब ये था। सारे रिकॉर्ड्स ऐसे कहते हैं कि शास्त्री जी की डेथ एक नेचुरल डेथ थी, हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो मर्डर की पॉसिबिलिटी की ओर इशारा करते हैं। तो अगर आप भी कहानी का वो पहलू जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत के रियल हीरोज की कहानी आप तक पहुंचाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। 1964 में शास्त्री जी भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने। एक ऐसे समय जब भारत को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। देश को व्हाइट रेवोल्यूशन देने वाले शास्त्री जी थे, देश को ग्रीन रेवोल्यूशन देने वाले शास्त्री जी थे। वो गांधी जी के फॉलोअर थे, लेकिन 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया तब उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने वाले शास्त्री जी ही थे। इस वॉर में भारत की सेना पीओके तक तो छोड़िए लाहौर तक पहुंच चुकी थी। इससे पहले की चीजें और सीरियस हो जाए, यूएन ने दोनों देशों को सीज फायर करने के लिए कहा। अब ये जमाना कोल्ड वॉर का था, जब रशिया और अमेरिका दोनों देश पूरे दुनिया में अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश में लगे थे। रशिया भी दुनिया में शांति लाने का काम कर सकती है, ये प्रूव करने के लिए रशिया ने शास्त्री जी और पाकिस्तान के आयूब खान दोनों को ताशकंद में बुलाया और ताशकंद में ये डिसाइड हुआ कि बोथ कंट्रीज विल अडॉप्ट द सेम पोजीशंस दैट दे हेल्ड ऑन 5 अगस्त 1965। ये अकॉर्ड साइन होते ही अगले दिन शास्त्री जी की डेथ हुई। रीजन बताया गया, हार्ट अटैक। इतना बड़ा लीडर एक दूसरे देश में अपने आर्च राइवल के साथ पीस अकॉर्ड साइन करता है और इमीडिएटली गुजर जाता है, लेकिन फिर भी कोई इंक्वायरी नहीं होती। ऐसा क्यों? अनुज धर ने अपनी किताब योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड में इस पूरे सब्जेक्ट पर थॉरली स्टडी किया, प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया और इसमें वो 3 थियोरीज प्रेजेंट करते हैं। थियोरी नंबर 1, सीआईए ने ताशकंद अकॉर्ड्स फेल होने के लिए शास्त्री जी का मर्डर किया। थियोरी नंबर 2, केजीबी यानी रशियन इंटेलिजेंस ने शास्त्री जी को पॉइजन देकर मारा। थियोरी नंबर 3, भारत के ही पॉलिटिशियंस ने अपने पर्सनल गेन के लिए शास्त्री जी का मर्डर किया। I'd highly recommend you to read that book to understand these 3 theories better. Let's focus on the mystery and uncover the truth. Mystery number 1, कहते हैं शास्त्री जी को जब थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट शुरू हुआ तो वो अपना स्वीट छोड़कर अपने साथियों के कमरे तक पहुंचे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके स्वीट में ही 3 फोन थे, जिसमें से एक फोन उठाने पर सीधा सिक्योरिटी को बजर बजता, लेकिन शास्त्री जी ने ये फोन्स कभी यूज ही नहीं किए, उठाए ही नहीं। क्यों वो पर्सनली उठकर दूसरे कमरे में अपने साथियों के पास गए? क्या वो कोई मैसेज देना चाहते थे? मिस्ट्री नंबर 2, पोस्टमार्टम से डेथ के रीजन साफ साफ क्लियर हो सकते हैं। रशियन इंटेलिजेंस ने ऑफर भी किया कि हम शास्त्री जी की बॉडी का पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन उनके ही भारत के साथियों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। ऐसा क्यों? मिस्ट्री नंबर 3, जब उन्हें भारत ले आया गया तब उनकी बॉडी पर काले नीले निशान थे, एज इफ उनकी बॉडी पर किसी ने अंदर से इंक डाली हो। उनकी बॉडी के पास किसी फैमिली मेंबर को भी आने नहीं दिया। जब उनकी वाइफ ने इन निशानों के बारे में पूछा तब उनके पूरे फेस पर चंदन लगाया गया ताकि ये निशान ढक जाए। उनके नेक पर यहाँ और पेट पर यहाँ खून के निशान थे, मानो किसी ने होल किया। उनकी ये कैप जो वो हमेशा पहनते थे खून से लथपथ थी, जो आज भी वैसे ही प्रिजर्व की गई है। मिस्ट्री नंबर 4, उनके डेथ के 1 साल बाद ब्लिट्स नाम की एक टैबलॉइड ने उनका एक लास्ट लेटर प्रिंट किया, जिसमें पाकिस्तान के साथ पीस की बातें की गई थी। बाद में पता चला कि ये लेटर फेक है। ये लेटर शास्त्री जी ने कभी लिखा ही नहीं था। जरा सोचिए, एक प्राइम मिनिस्टर का फेक लेटर वही इंसान लिख सकता है जिसको ये गारंटी हो कि ये लेटर फेक है। ये कहने के लिए प्राइम मिनिस्टर कभी भारत पहुंचेंगे ही नहीं। पार्लियामेंट में इस लेटर के बारे में एक सिंपल सवाल उठाया गया कि अगर ये लेटर असली है तो क्या हम रिकॉर्ड्स में जाकर इसका एक सीरियल नंबर निकाल सकते हैं? क्योंकि एक बार ये पता चल जाए कि ये लेटर किसने लिखा था तो प्रूव होता कि किसी न किसी को तो उनके डेथ के बारे में पता था। लेकिन इसका जवाब देने से पहले ही चेयरमैन सर ने कहा द क्वेश्चन आवर इज ओवर। एक स्मार्ट इंसान ने कहा है कि सवाल लेट होने से सवाल गलत नहीं हो जाता। मिस्ट्री नंबर 5, ताशकंद में उनका जो कुक था उसका आगे क्या हुआ किसी को नहीं पता। तो जिस कुक ने उनका लास्ट मील बनाया उसे भारत में किसी ने भी कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन हाँ, रशियन इंटेलिजेंस ने उसे अरेस्ट जरूर किया था और ये बात भारत में छुपाई गई। जो इंडियन आई विटनेसेस ताशकंद में मौजूद थे उनसे भी कभी कोई सवाल नहीं पूछे गए। उनमें से एक डॉक्टर भी थे, डॉक्टर चो, जिनकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई और उनकी पूरी फैमिली भी इस कार एक्सीडेंट में मारी गई। हाँ, हो सकता है कि एक्सीडेंट हो या ऐसे भी हो सकता है कि कोई चाहता था कि कुछ राज गिरे। मिस्ट्री नंबर 6, अनुज धर ने 2009 में राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर शास्त्री जी के डेथ की ऑफिशियल रिपोर्ट्स मांगी, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन करने के लिए ये रिपोर्ट्स को कॉन्फिडेंशियल रखना जरूरी है। ऐसा क्या है इन रिपोर्ट्स में? ऑन द अदर हैंड, पिछले कुछ सालों में केजीबी और सीआईए दोनों ने इस मामले के बारे में कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स अपनी साइड से रिलीज किए। तो इस सारे डेटा के साथ इस केस में काफी ज्यादा मदद हो सकती है, लेकिन हमारे खुद के देश ने ही हमारे प्राइम मिनिस्टर की डेथ कैसे हुई ये समझना जरूरी नहीं समझा। लेकिन क्यों कोई उन्हें मारना चाहेगा? उन्हें मारकर किसी को क्या मिलेगा? शायद मोटिव ताशकंद अकॉर्ड में ही हिडन है। लॉन्ग लास्टिंग पीस के लिए भारत ने अपनी तरफ से जो हो सकता था वो किया। जो फौज लाहौर तक पहुंच गई थी उसे वापस बुलाया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट स्टेप ताशकंद अकॉर्ड से मिसिंग था और वो है पाकिस्तान की कश्मीर में इन्वॉल्वमेंट।
ताशकंद अकॉर्ड में से पाकिस्तान अपने साइड से कश्मीर में गुरिल्ला एग्रेशन कम करने के लिए क्या अश्योरेंसेस देगा, ये इम्पोर्टेंट चीज मिसिंग थी। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि शास्त्री जी ने अंडर प्रेशर आकर ये अकॉर्ड साइन किए थे और घर आने के बाद वो ये बात रिवील करने वाले थे। उन्हें सारी टर्म्स मंजूर नहीं थी। शास्त्री जी एक फाइटर थे और वो ऐसी कोई डील साइन नहीं करते जिससे भारत को फायदा ना हो, ऐसी एक डील जो भारत के भले के लिए ना हो। शास्त्री जी's डेथ gave sanctity to the ताशकंद अकॉर्ड। ये शब्द CIA खुद यूज करती है क्योंकि हमारे इमोशनल भारतीय लोगों ने ये समझ लिया कि ये उनकी आखिरी इच्छा थी और ताशकंद अकॉर्ड को मान लिया। तो सच क्या है? आज भी ये किसी फाइल में दबा हुआ है। सरकारें आई गई लेकिन किसी भी सरकार ने उनकी इन फाइल्स को डिक्लासिफाई नहीं किया। आज शास्त्री जयंती और गांधी जयंती दोनों है। क्या हम उनके लिए उनके बर्थडे पर उन्हें ये गिफ्ट दे सकते हैं, उनके एक प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं, सच लोगों के सामने ला सकते हैं? अगर छुपाने जैसा कुछ है ही नहीं तो क्या हम उनकी फाइल्स को डिक्लासिफाई कर सकते हैं, उनकी फैमिली को और पूरे देश को सच बता सकते हैं? अगर आप भी हमारी तरह ये सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। सत्यमेव जयते हम कहते जरूर है, लेकिन ऐसे ही मौके होते हैं ये प्रूव करने के लिए कि क्या हम सच में इसमें विश्वास रखते हैं। और यही सच्चा सवाल आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे एस्टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको 1193 AD, Turkish invader Bakhtiyar Khilji launched a brutal attack on Nalanda University. 90 lakhs books were burnt for 3 months. But why? Well, in this video we'll learn the two main reasons why Bakhtiyar Khilji destroyed Nalanda University and how we are still suffering because of it. Number 1. Insecurity and jealousy towards the knowledge of the non-Muslims. Once Bakhtiyar Khilji was very ill and his hakims couldn't cure him, so he was forced to take help from the principal of Nalanda University, Acharya Rahul Sribhadra. Khilji used this opportunity to humiliate the Hindus. So he challenged Acharya to cure him on the condition that he will not take any of his medicine. Now comes the twist. Acharya gave him a Quran and asked him to read few pages every day. Shockingly, Khilji's health improved and he came to know that Acharya had applied medicines on the pages of the Quran, whose smell cured him. Now he was very jealous and he wanted to destroy the source of their knowledge. And this event takes us to the second point, which is he thought that by destroying the roots of our knowledge, he will be able to take the first step towards colonizing the country. Let's come to the second part of the video. For me, the key takeaway of this video is that we don't belong where we are right now. For centuries, we have been misinterpreted, misguided, misinformed about our culture, about our history. Now it's high time to rediscover the lost golden history, to make our present better. This channel is a small effort towards this motto. Comment down below regarding this issue and consider subscribing.